जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। I'm enjoying good health and hoping the same for you people. May Allah help you get what you want to get. Ameen. Dear students, we are going to resume our lecture from where we left. So let's move towards the birds. Correlative conjunctions. Dear students, correlative conjunctions ये हमारा लेक्चर है। प्रीवियस हमने ये लेक्चर आपको दिया प्रीवियसली और यहाँ से छोड़ा ऑनवर्ड हम उसे आगे लेकर जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी डियर स्टूडेंट्स, कोरेलेटिव कंजंक्शंस हम कर रहे हैं। फाल्टी कोऑर्डिनेशन एंड कंजंक्शंस आर नेक्स्ट वन दैट्स कमिंग आवर वे। एज इफ, एज दो, फॉलोड बाय वर। एज इफ या एज दो के बाद वर आएगा। ही बिहेव्स as if he were very wise. He behaves as if he were very wise. As if या as though। She talks as though she were very sagacious, wise। SAGACIOUS, sagacious, खिर्दमंद को, दानिशमंद को, अक्लमंद को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एज इफ और एज दो फॉलोड बाय वर। Not only but also. Not only is she a beautiful but also intelligent girl. Dear students, इसके साथ वर्ब इन्वर्जन कर भी सकते हैं, आप ना भी करें तो फिर भी ठीक है। वंस अगेन बताता चलूँ कि वर्ब इन्वर्जन क्या है। We place the verb before the subject to make the sentence striking and unusual. It also lays special effect. Not only is she a beautiful but also intelligent girl. She is not only a beautiful but also intelligent girl. Single article for single person, double articles for double persons. यही वजह है कि जब मैंने ब्यूटीफुल से पहले आर्टिकल ए लगा दिया तो इंटेलिजेंट से पहले नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ फ़र्द वाहद की बात हो रही है। जी डियर स्टूडेंट्स, बोथ फॉलोड बाई एंड, बोथ Salim and Akhtar are absent today. Both Salim and Akhtar are absent today. जी, the next one is lest followed by should. Lest followed by should. Work hard lest you should fail.
वाई वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। लेस्ट मुबादा के, कहीं ऐसा ना हो, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद मज़ीद हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी आप ये नहीं कहेंगे कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, दैट्स इनकरेक्ट टू से। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। इसमें थोड़ी सी जो मैंने बात बताई है कि लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मज़ीद इसके बाद नेगेटिव हम नहीं लगाते। यू नीड टू बेयर दिस रियलिटी इन माइंड एज वेल सो दैट यू मे बी एबल टू गेट व्हाट यू वांट टू गेट इंशाल्लाह। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी मार्क मैटर्स, याद रखें एक एक नंबर मैटर करता है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं या जॉब के लिए, इवन CSS के लिए आप अपीयर होने जा रहे हैं, तो एक एक नंबर मैटर करता है। यू हैव टू फाइट इवन ईच एंड एवरी मार्क, सो डोंट मेक that sort of things that negligible, they are of great significance. Dear students, our next one is nothing else followed by wet. Nothing या nothing else followed by but. All the day he does nothing but play. All the day he does nothing but play. But play, अब but इसके साथ आगे सिंपल बेस फॉर्म आएगी, फुल इन्फिनिटिव नहीं आएगा। आप ये नहीं कहेंगे but to play, but play। अगर वर्ब आ रहा है तो सिंपल बेस फॉर्म आएगी, फुल इन्फिनिटिव नहीं आएगा। All the day he does nothing but play। but के यहाँ मानी है, ये प्रीपोजिशनल है जिसके मानी है एक्सेप्ट, EXCEPT, माँ सिवाय, यानी सारा दिन वो सिवाय खेलने के कुछ नहीं करता है। इस तरह देखें, इट इज़ नथिंग एल्स बट फ्रॉड। इट इज़ नथिंग एल्स बट फ्रॉड, ये सिवाय धोखा के कुछ और नहीं है। इट इज़ नथिंग एल्स बट फ्रॉड। देन एनी फॉलोड बाई अदर। देन एनी फॉलोड बाई अदर। अल्लामा इकबाल is a greater poet than any other poet of the world. Allama Iqbal is a greater poet than any other poet of the world. Than any other poet of the world. Than any followed by other. Than any followed by other. So followed by that. She spoke so low, LOW. She spoke so low that I couldn't understand her. She spoke so low that I couldn't understand her. जी डियर स्टूडेंट्स, so that followed by may, यानी इस so that के बाद हम may लगाएंगे एज द सिचुएशन में भी। फॉर एग्जाम्पल,
I eat so that I may live. I eat so that I may live, while others live so that they may eat. So that followed by may. So that followed by may. He works hard so that he may be able to realize his dream. So that he may be able to realize his dream. Yes, hard work is the biggest reality of this world, which cannot be denied. Rest assured, Allah always rewards your hard work and diligence. It never goes waste. And it is pretty pre-decided and preordained from where and when He is to reward you and at what time. जैसे अल्लाह फरमाते हैं कि बंदे को गुमान भी नहीं होता कि कहाँ से हम उसकी रोज़ी के सिलसिले बना देते हैं. तो ये डियर स्टूडेंट्स, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 important thing to keep in our mind, in our day-to-day life, that Allah always rewards our actions, whatever, and we always need to imply ourselves in some positive activity, in some righteous, pious, upright activity. Because in this ephemeral world, in this short-lived world, which is just like a bubble, we need to leave good impressions behind. When we are going to live future life. Future life means life after death. ये भी एक sentence, dear students. She will spend her future life in England. तो दुनिया की जो बाकी की ज़िंदगी होती है वो रेस्ट ऑफ लाइफ होती है. फ्यूचर लाइफ मीन्स लाइफ आफ्टर डेथ. सो वी नीड टू बी पर्टिकुलर in our day-to-day life about our future life. Yes, the real world comes next. The world is a 9 days wonder. The world is a 9 days wonder. जी dear students, our next point is so followed by as. नेगेटिविटी है, so followed by as. ये नेगेटिविटी के लिए अमूमी तौर पर होता है. He walked so slow as he dared. He walked या he worked so slow as he dared. He worked so slow as he dared.
नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, एज फॉलोड बाई एज, ये इक्वलिटी के लिए है, इक्वलिटी के लिए है। शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर एल्डर सिस्टर इज़, शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज हर एल्डर सिस्टर इज़, इक्वलिटी के लिए एज फॉलोड बाई एज। तीसरा डियर स्टूडेंट्स, नॉट टू स्पीक ऑफ या व्हाट टू स्पीक ऑफ फॉलोड बाई इवन, not to speak of या what to speak of, not to speak of running fast even he cannot walk fast, what to speak of coming first in the exams even he cannot pass it। so not to speak of या what to speak of followed by even। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये हिस्सा कोरिलेटिव कंजंक्शंस का जो यहाँ कंप्लीट होता है आपको बखूबी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इसी तरह चैनल से जुड़े रहिएगा टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। May Allah bless you with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. Ameen summa ameen. Till next, Allah Hafiz. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.